Hello everyone, welcome to my channel. We had started with exercise 10b and up to third question we had completed. So we'll start with question 4 now. The question 4 is, in triangle ABC, BC is equal to 7.4 centimeters. Calculate BM. Assign a special name to the line segment AM. So let's see the figure here. ABC is a triangle and we can see a segment AM which divides BC into two equal parts because BM and MC are equal, which is given here, and we have to give name to this segment. So we already know that AM is the line segment which divides BC, that is the opposite side, into two halves. यानी कि ये AM जो है वो एक मीडियन है, एक मीडियन ही ऑपोजिट साइड, क्योंकि ये इस वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ है और दूसरे साइड को, ऑपोजिट साइड को डिवाइड करता है टू इक्वल हाफ्स में. तो दैट मीन्स दिस इज अ मीडियन. AM is the median. So now we have to find BM. So what will be BM? BM is equal to MC. That means BM is equal to half of BC. We know BC as 7.4 centimeters. We will divide 7.4 centimeters by 2. So BM is equal to AM. A is vertex. AM is the median. We have to give a special name, that is median. BM is equal to AM is equal to 7.4 upon 2. 2 3s are 6. 1 here. तो 14 हो जाएगा. 2 7s are 14. 3.7 सेंटीमीटर. BM क्या है? 3.7 सेंटीमीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन. So let's see what is the fifth question. In triangle ABC, angle A is equal to 54 degrees and angle NBC is equal to 25 degrees. Calculate angle C. Assign a special name to the line segment BN. तो यहाँ पे देखिएगा ABC is a triangle and BN is the line segment. We can see that by the symbol here, it's a right angle triangle. Perpendicular है ये. BN is perpendicular to AC और ये right angle है. तो इसका मतलब ये है कि BN is an altitude, क्योंकि ये B से स्टार्ट होता है ऑपोजिट वर्टेक्स से और दूसरे साइड को ये कर रहा है, वहां पे परपेंडिकुलर बन रहा है, यानी कि ये वर्टेक्स से B वर्टेक्स से स्टार्ट होके AC को परपेंडिकुलर कर रहा है, यानी कि ये एक altitude. BN is an altitude. That will be the special name given. Now we have to find angle C, this angle. तो कैसे होगा? We know that angle A is equal to 54 degrees. Angle NBC जो है वो क्या है? 25 डिग्रीज है. और हमें मालूम है कि एंगल BNC is 90 डिग्रीज. तो हमें सिर्फ एंगल C फाइंड आउट करना है. तो कैसे कर देंगे? BNC प्लस NBC plus angle C is equal to 180 degrees, because sum of, we will consider this triangle NBC. The sum of these three angles is equal to 180 degrees. So BNC plus angle NBC plus angle C is equal to 180 degrees. We know angle BNC is equal to 90 degrees. Perpendicular है इसलिए. Plus NBC is already given as 25 degrees. Plus angle C, which is unknown, is equal to 180 degrees. तो 90 प्लस 25 क्या होगा? 0 प्लस 5 इज 5. 9 प्लस 2 इज 11 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. सो एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस, क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड साइड में है तो राइट हैंड साइड में आते ही माइनस हो जाएगा. तो 180 माइनस 115. सो 0 माइनस 5 नहीं कर सकते तो बोरो. 10 माइनस 5 इज 5. 7 minus 1 is 6. 1 minus 1 is 0. तो 65 डिग्रीज हो गया. एंगल C is equal to 65 degrees. Therefore, angle C is equal to 65 degrees, which we have to find out. एंगल C फाइंड आउट करना था. और BN is perpendicular to AC, तो वो altitude है. So BN is called as the altitude. ठीक है. तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन.